Hi, friends. Welcome to Made Sense. Today, we are diving into an interesting talk about medical careers in two different countries, the United States and India. This episode is for anyone who is thinking about being a doctor, those who already are, and anyone curious about how healthcare works in different places. So, join us as we learn cool stuff about being a doctor in the US versus India. Make sure you don't miss all the cool stories and facts we have for you in this episode of Medical Careers US versus India. Stick till the end. My name is Ravi, and our special guest today is Dr. Preetham from US. Hey Preetham, how are you doing today? Can Hi, you Ravi. please introduce yourself to our audience? Hi, Ravi. Good. Thank you for introducing me. I am Preetham. I am one of the cardiology fellows right now in the US. I did my medical school in AFMC. I finished my medical school in 2019, I believe, and then 2020 I moved to Kansas City in the US for my residency, and that was for 3 years. And then I applied for cardiology, and I just had my cardiology fellowship. I'm in my first year right now. I am based out of Milwaukee, Wisconsin right now. So that is my story in short. Cool. Okay, when did you go to US? So that was in 2020. So I did my electives and stuff that you need to typically do to get residency in the US. So that I did in 2018, 2019. And then finally I moved for good in June 2020. Oh, was your whole schooling in India or was it here and there? No, no, my whole schooling was in India. I was born and brought up in India. Up until medical school, I was in India. I had never been to the US before. Okay, till MBBS. Yeah, yeah. Till Okay. MBBS, I was in India. So, where you did your MBBS? So it was in AFMC. So it's Armed Forces Medical College. It's a very good college it's in Pune. It's one Yeah, of yeah, I heard about it. It's one of the top medical colleges in India, I think. yeah, it is. It is. Okay, I think our audience have many questions about this medical career in India versus the US. So let's dive deep into that. Sure. So, what are the key differences in the medical education systems between the US and India? So I think in terms of medical education, in India हम लोग 12th के बाद डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एमबीबीएस. Yeah. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. सो यहाँ पे they do 12th. That's high school. They finish high school and then they do 3 to 4 years of undergrad, and then they do 4 years of medical school. The second difference is हम लोग का MBBS जो 5.5 years होता है उसके बाद we can directly start practicing. We can do general practice, but many people still in India, we do residency. But if you want to, you can practice right after MBBS. But यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे even if you do those 8 years of training, you still have to do a residency. And the minimum is, there are some residencies for 2 years, but all the clinical residencies are mostly 3 years. So there's another 3 years of minimum training before you can start. That is like just the timeline wise differences. अगर हमें क्वालिटी या फिर द काइंड ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो इंडिया में जनरली जो हमारा ट्रेनिंग होता है वो मेडिकल कॉलेज में ओनली द लास्ट 2 to 3 years हमारा होता है ट्रेनिंग, एंड 1 year ऑफ इंटर्नशिप होता है विच इज़ फुल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो यूएस में होता है. लेकिन दैट इज़ जो उनका मेडिकल स्कूल होता है उसमें 2 साल जो सेकेंड 2 years होते हैं, थर्ड एंड फोर्थ ईयर, दोज आर क्लिनिकल. एंड बट उनका कोई इंटर्नशिप नहीं होता, तो रेजिडेंसी इज देयर ओनली क्लिनिकल एक्सपीरियंस. बट आई थिंक इंडिया में वी ट्रेन बाय वॉल्यूम, and Yeah, yeah, US yeah. may be trained by variety. Okay, volume in a sense, what do you mean? You mean you read more and more and by heart and kind of things in India, or you thinking talking about that volume? No, no. What I'm saying is, so the volume that I'm referring to is the patient load. So, for example, in residency in India versus in the US, in US you have very strict work hour limitations that you cannot work more than so many hours in a week, and you cannot see more than so many patients in a day.
बट इंडिया में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. तो इंडिया में द ट्रेनिंग इज, व्हेन आई से वॉल्यूम बेस्ड, दैट मीन्स दैट they see as many patients as humanly possible in residency, and that is how the system believes that the doctors should be trained. So that is an ideology that India में अभी भी prevalent है. But US में ऐसा नहीं है. US में they believe that उनका थोड़ा सा ज़्यादा all round development होना चाहिए. तो वी हैव टाइम्स स्पेसिफिक कि हम तुम्हें इतने 8 पेशेंट देखने तुम्हें आज, बट यू हैव टू सी देम इन फुल. सो फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में मेरे पास एक पेशेंट आता है तो मैं दिन में 50 पेशेंट देख सकता हूँ. तो बट एक जो पेशेंट आता है मेरे पास, उसका मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है. इवन टू बिगिन विथ और टू एंड विथ, आई डोंट नो अ लॉट अबाउट द पेशेंट. So I'm fixing a very small problem of this and then I'm sending him home. But US में ऐसा नहीं है. We take into account more than just that problem itself. तो वो सब करने का मुझे मौका मिलता है यूएस में रह के, बट इंडिया में रह के मुझे शायद वो नहीं मिलता. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग in one sense at least. So that is what I mean by volume. तो इंडिया में ओके. भी है कि बट मैंने सुना है कि यूएस में भी कि ज्यादा घंटे, मतलब यू हैव टू वर्क मोर आवर्स. yeah सो हाउ कम दैट व्हेन यू yeah आर सेइंग देयर इज सम स्पेसिफिक गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग, सो इवन इन इंडिया और यूएस आल्सो पीपल आर वर्किंग मोर आवर्स. right. So like, I think when you say more hours, you're comparing it to Europe. You're not ओके. comparing to India. So India में जो workers होते हैं, when I say restriction, तो यूएस में 80 आवर वर्क रेस्ट्रिक्शन होता है रेजिडेंट्स के लिए और फेलोज के लिए. इन अ वीक यू कैन नॉट वर्क मोर देन 80 आवर्स. एंड typically, so if you say that's going to be like anywhere between like 12 to 14 hours a day. Okay, उससे ज़्यादा you cannot work. But जो मेरे friends इंडिया में रेजिडेंसी कर रहे हैं, they go in the morning for rounds at 7 a.m. let's say. So they see patients and do everything and they do whatever they need to do. Sometimes they come back by 11 p.m. and they're like, मैं आज 11 बजे वापस आ गया घर. कुछ लोग 2 बजे वापस आ रहे हैं, 2 a.m. And and so that is it's very different. So Okay. Yeah, you're saying residency and fellowship. What do you actually mean by that? Is yeah, it something? sorry, I assumed, but residency is so for example, इंडिया में अगर हम करते हैं तो एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद वी बिकम जनरल फिजिशियंस, राइट. तो जीपी बोलते हैं यूरोप में, आई थिंक जीपी तो जनरल फिजिशियंस होते हैं. लेकिन उसके बाद अगर हमें स्पेशलाइज करना है तो देन यू हैव टू डू 3 more years of training. That is called residency. Oh, okay. उसके बाद अगर हमें सुपर स्पेशलाइजेशन करना है तो यू आर चूजिंग वन सब स्पेशलिटी. तो दैट इज एक्चुअली इन इंडिया इट्स कॉल्ड सुपर स्पेशलिटी, और यहाँ पे उसको फेलोशिप बोलते हैं यूएस में. तो यूएस में सो फॉर एग्जांपल इन माय केस, मैं इंटरनल मेडिसिन कर रहा हूँ, दैट इज अ रेजिडेंसी किया मैंने. सॉरी, दैट इज अ रेजिडेंसी. एंड जो सब स्पेशलाइज किया मैंने कार्डियोलॉजी में, दैट इज अ फेलोशिप. Okay. Yeah. So, okay, that's fine. I got it now. So, can you discuss the opportunities and challenges of pursuing a medical career in the US versus someone trained in India? Yeah. So for somebody who trained in India, we are called international medical graduates in the US. तो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है. The process is pretty much, many people on MBBS they already know about this. So they start with doing something called as USMLE. It's a licensing exam for graduates in the US. So you take step 1, then you take step 2, then you take step 3. And after step 2, you can start applying. So you apply to many places through one portal in the US, and then you get access to hundreds of residency programs. You apply to all of them, and then they interview you, and then you rank all the programs based on how you like them. They will rank you based on how they liked you, and then there is a match, and then that is how you get into a program. Okay. So but in terms of kitna mushkil hai वगैरह, there are some specialties in the US which are traditionally foreign grads आके वो specialties करते हैं. तो internal medicine is one of them. कि बहुत सारे foreign grads यहाँ पे आते हैं, इंडिया से हो शायद, चाहे कहीं और से हो, यहाँ पे आते हैं. इंटरनल मेडिसिन सबको इजीली मिल सकता है.
But same with neurology, pediatrics. So ये specialties are, we say they are open to foreign grads. Every Okay. specialty is open to foreign grad, but it's easier to get into these specialties as Okay. compared to other specialties like radiology, ortho, Okay. dermatology. ये सब मुश्किल है मिलना यहाँ पे. अच्छा, it's purely basis on easy to get in, और वही क्राइटेरिया है, और भी क्राइटेरियाज होते हैं इसमें, नहीं, like once you become that you earn more money भी एक क्राइटेरिया बनता है उसमें जो मनी तो अगर नहीं. डेफिनेटली क्राइटेरिया है, बट जो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट जो रेजिडेंसीज जो होते हैं, सपोज ऑर्थो, डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी, ये रेजिडेंसीज या फिर सर्जरी इवन समटाइम्स, these residencies typically give you a higher market value money wise, Okay. but वो specialties मिलना मुश्किल है foreign grads को. हम्म. तो जो इंटरनल मेडिसिन वगैरह है उनमें एक्चुअली दे आर समवेयर बीच में. इफ यू कंपेयर ऑल स्पेशलिटीज, समवेयर बीच में आता है इंटरनल मेडिसिन. इंटरनल मेडिसिन के अंदर देर आर वेरियस सब स्पेशलिटीज, सो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, इनका फिर हाई पे होता है. तो देन पीपल चूज टू डू दिस. तो मनी इज डेफिनेटली अ फैक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली जो हाई पेइंग रेजिडेंसीज है वो हमें मिलना मुश्किल है टू बिगिन विद. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सबको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यूएस इज फार फार बेटर देन इंडिया. Yeah. Okay, so how does the healthcare infrastructure and patient population impact medical practice in the US compared to the India? Yeah. So also give a little bit of details. So what do you actually mean by healthcare infrastructure? People may not be knowing what is actually. So I think that's a very good question. So healthcare infrastructure, to me, what that means is, for example, it can be diagnostics and therapeutics, right? So diagnostics, for example, availability of certain kinds of MRI. इंडिया में शायद हर जगह ना हो. And so in therapeutics, availability of some kind of radiation therapy शायद कुछ जगह पे ना हो. But I would say that इंडिया में आई थिंक इट्स लाइक अ बायस कि हाँ यूएस में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में नहीं है. आई वुड लाइक टू रीफ्रेज दैट. आई वुड से यूएस में ज्यादा वाइडली अवेलेबल है. इंडिया में हर जगह वाइडली अवेलेबल नहीं है. अगर आप मुंबई दिल्ली जाएंगे तो मुंबई दिल्ली में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ केयर का कि वो यूएस के कई सिटीज में नहीं है. या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट समटाइम्स वी नेग्लेक्ट कि इंडिया में जो चाहिए आपको मिलेगा, बट आपको कुछ शहरों में जाना पड़ेगा. एज अपोज टू दैट यूएस में थोड़ा ज्यादा वाइडली अवेलेबल है. यूएस में भी एक्चुअली सरप्राइजिंगली बहुत गैप्स हैं, हम बात नहीं करते हैं. बट या आई थिंक द जनरल आंसर इज यस, यूएस में इंफ्रास्ट्रक्चर मोर वाइडली अवेलेबल है, but India mein it's a little more limited to some of the cities. Yeah. And the population impact? Yeah. So population impact. What was your first question that you initially asked? How does the healthcare infrastructure and the patient population impact medical practice? Right. So yeah. So how does this healthcare infrastructure impact my medical practice? So that is again a very good question. तो अगर मैं यहाँ पे यूएस में हूँ तो I rely more and more on diagnostics and therapeutics, less on my own clinical judgment as compared to many Indian doctors. तो जब इंडियन, अगर मैं खुद को ही इसमें डालूं, तो जब मैं एक रूरल हेल्थ केयर ट्रेनिंग सेंटर होता है हमारा, पोस्टिंग होता है इंटर्नशिप में, तो जब मैं वहां था तो मेरे पास किसी चीज का भी एक्सेस नहीं था. मेरे पास मुझे अगर अल्ट्रासाउंड भी कराना है तो मुझे कहीं भेजना पड़ता था उन लोग को. वेरी स्मॉल विलेज, ऐसा सिटीज में नहीं होता है, बट विलेजेस में ऐसा अभी भी होता है. तो वो मेरा प्रैक्टिस थोड़ा बहुत लिमिट कर रहा था, राइट. बट अगर मैं सिटीज में प्रैक्टिस करता हूँ तो वो मेरा लिमिटेशन फिर से चला जाता है. बट दैट इज हाउ इट इम्पैक्ट्स दैट हाउ यू प्रैक्टिस इज यू व्हाट यू रिलाई मोस्ट ऑन. अगर यहाँ पे मैं यूथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आई विल रिलाई ऑन व्हाट एन MRI टेल्स मी और व्हाट द MRI शोज मी, more than like many of the clinical I would say like people sometimes at times some doctors in the US rely less on their clinical acumen and more on diagnostics. I would say that is one way to put it. But India में अभी तक clinical acumen का बहुत ज़्यादा value है because of this infrastructure not being available very widely. Population जो है, that is a very that we talk about every day here, is that इंडिया में population जो है
वो there are different types, different sectors, right? कुछ लोग हैं जो रिच है और जिनको हेल्थ केयर एक्सेसिबल है बहुत ज्यादा, एंड कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दे डोंट हैव एक्सेस. Yeah. बट आई थिंक ओवरऑल इंडिया में लोग बहुत ग्रेटफुल हैं. Hmm. That population is very grateful, as opposed to when I practice here, I kind of see that entitlement sometimes, Hmm. which No, grateful because they are not having the access. If they even get the access to it, they feel grateful. correct. That is the thing. I mean, it's not that, there are It's some not people because in of the countries. mindset or Yeah. culture or something. It's just because of the lack of medical facilities. So Well, because they there's a little bit of cultural aspect to this, right? I mean, as an Indian, you would know that doctors का एक respect होता है इंडिया में, right? So that is a हाँ, cultural aspect. अभी वो culture क्यों बना? क्योंकि हमारे हम्म, पास access नहीं था. That is one theory, right? But एक हम्म, culturally एक है कि मतलब people are grateful to doctors. वो है. यहाँ पे वैसा वो मैं feel नहीं करता हूँ. But हम्म, as opposed to that, अगर हम how does population influence my practice, देखा जाए तो हम्म, मुझे इंडिया में अफोर्डेबिलिटी इज अ वेरी बिग क्वेश्चन. या अफोर्डेबिलिटी इज अ वेरी बिग क्वेश्चन. तो अगर मुझे कोई दवाई प्रिस्क्राइब करना है तो मैं सोचता हूँ कि ये बंदा वो ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, तो उसका बहुत क्वेश्चन रहता है. बट बिकॉज इंडिया में अनइंश्योर्ड पॉपुलेशन इज द मेजोरिटी. राइट राइट अनइंश्योर्ड पॉपुलेशन है तो उनको खुद के पॉकेट से पे करना पड़ता है. तो दैट देन इट्स अ होल अदर डिस्कशन अबाउट व्हाई पीपल आर एबल टू अफोर्ड और नॉट अफोर्ड. दैट इज बट आई हैव टू थिंक अबाउट दैट. यूएस में आपको लगता होगा कि इंश्योर्ड पॉपुलेशन है तो लोगों को लगता है कि अरे अरे कुछ भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इधर. इट्स नॉट द केस. ओके सो राइट एक्चुअली बिकॉज इंश्योरेंस के ऊपर यहाँ पे बहुत पावर है. इंश्योरेंस हैज कैन डिसाइड लाइक ये दवाई. तो अगर सपोज मैं यहाँ पे बहुत रिसर्च ओरिएंटेड लोग बोलते हैं तो यहाँ यहाँ पे है बहुत रिसर्च ओरिएंटेड. बट लाइक if a study came up like 2 years ago and that showed that there is this medication that has very very good outcomes, and I'm like, no, my patient needs that medication, and I can prescribe that, but it won't get covered by insurance. And the story of how expensive medications can be in the US if you're not covered under insurance, and here also people are not able to afford. So actually दोनों जगह पे I have to think about affordability. It's a very big part of my practice. Yeah. So that is. सो जो पिछले क्वेश्चन में हमने कल्चर की बात करी थी, तो द क्वेश्चन व्हाट आर द कल्चरल एंड लाइफस्टाइल कंसिडरेशंस फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स वर्किंग इन द यूएस वर्सेस इंडिया. कल्चर और लाइफस्टाइल क्या मैटर करता है कि उस प्रोफेशन में जाने के लिए? Yeah, I think बहुत मैटर करता है. तो as in like how it influences our practice, like how people's culture influences our practice. Is that what you're asking? No, how they consider to getting into the medical profession, working in the Oh, okay. profession. Yeah. Yeah, Yeah. how the culture and lifestyle just was talking Right. about in the. That's a very interesting question. So इंडिया में हम लोग को like you also know 12th जब पहुंचते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं. अभी तो वह खैर आई थिंक थिंग्स हैव चेंज अ लिटिल बिट बट फॉर द बेटर. बट पहले जब मैं था तो हमारे पास दो ऑप्शंस थे. तुम इंजीनियरिंग करो या तुम Yeah, लाइक yeah, yeah. मेडिसिन करो. Mm, तो वो ऑप्शंस थे. mm, And at the age of 17 I decided I went to medical school when I was 17. तो mm, यहाँ पे लोगों को बोलते तो यहाँ पे लोग दे गेट सरप्राइज कि मतलब हाउ डिड यू डिसाइड टू गेट इनटू मेडिसिन. एंड देन आई mm, टेल देम दैट इट्स लेस ऑफ अ डिसीजन एंड मोर ऑफ एन ऑप्शन. कि चूज करो तुम ए वर्सेस बी. देयर इज नो नन mm, ऑफ द अबव देयर. यहाँ पे mm, ऐसा नहीं. यहाँ mm, पे द कल्चर इज यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है. तो mm, उस हिसाब से लोग दे वेट अंटिल 23 ना, एटलीस्ट 21 22 एटलीस्ट बिफोर दे स्टार्ट मेडिकल स्कूल. तो mm, यू वुड से कि यार 17 साल के बच्चे होते हैं, 21 साल के बच्चे होते हैं, बट 17 एंड 22 इज नॉट द सेम एट ऑल. इन टर्म्स ऑफ mm, मैच्योरिटी इट इज वेरी वेरी डिफरेंट. mm, एंड सो जब लोग उतना दे लिव देयर लाइव्स फॉर दोस 3-4 एक्स्ट्रा इयर्स, दे गेट अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव. दे mm, सी अ लॉट मोर पीपल. बिकॉज हम 17 साल की उम्र तक तो हम पेरेंट्स जाते होते हैं. जो mm, पेरेंट्स ने बोला वो सच है हमारे लिए. जो नहीं mm, बोला वो एग्जिस्ट नहीं करता है. बट इन दोज ईयर्स, फॉर्मेटिव ईयर्स, व्हेन दे आर डूइंग देयर अंडरग्रेड, यहाँ के mm, उनको बहुत एक्सपोजर मिलता है. सो दे सी ऑल काइंड्स ऑफ प्रोफेशंस एंड दे एक्चुअली मेक अ मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन देन आई हैड व्हेन आई mm, वेंट मेडिकल स्कूल. mm, द कल्चर हियर इज नॉट दैट डॉक्टर हो तो तुम भगवान हो. mm.
Yeah, right. You're तो right. पेरेंट्स के लिए, I हमारे was इंडियन पेरेंट्स के लिए वो साइकी होता है कि यहाँ पे चल डॉक्टर रहा है. को इतना इज्जत मिलेगा तो मेरे बच्चे को इज्जत मिलना चाहिए, God. तो Hmm. मेरे बच्चों को डॉक्टर बनना चाहिए, राइट? Hmm. पहले इंजीनियर के लिए भी था ऐसा, अभी वो चेंज हो गया। Hmm. डॉक्टर है तो बट बहुत अच्छा है तो बनना, इज्जत मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। Hmm. यहाँ पे इफ यू आर इन द हेल्थ केयर सिस्टम आपको थोड़ा इज्जत मिलेगा, आप डॉक्टर हो नर्स हो आपको थोड़ा इज्जत मिलेगा, बट इट्स Hmm. नॉट, दैट्स नॉट इट, यू नो, लाइक Yes. Yes. सो वो दे रिस्पेक्ट लाइक डिफरेंट प्रोफेशंस इक्वल, Hmm. बट Yeah. इंडिया में थोड़ा सा वो बायस्ड है, तो दैट इज अ कल्चर। कोई यहाँ पे मैंने बहुत लोग को सुना है बोलते हैं कि मेरी बेटी नर्स है, Hmm. Hmm. प्राउडली। हमारे यहाँ कोई बोलता थोड़ी है ऐसे, ये मैं यूरोप में भी वही बोलना ट्रेंड है. चाहिए, Hmm. बट बोलते नहीं है हमारे यहाँ, तो थोड़ा सा वो है, बस सो दैट इज अ Hmm. डिफरेंस। तो Hmm. एंड ऑल्सो दूसरा ये है कि जब मैं एज एज इन इंडिया, जब मैं 22 साल का हूँ तो मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, 22-23 साल का मैं डॉक्टर बन गया, राइट? तो एंड दैट इज माई फर्स्ट जॉब, Hmm. एंड आई एम अ डॉक्टर। यहाँ पे ऐसा Hmm. नहीं, यहाँ पे व्हेन दे डू अंडर दे डू मेड स्कूल, दे डूइंग लॉट ऑफ जॉब्स, Hmm. से भी मैच्योरिटी आता है मेरे हिसाब से, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है उसमें लोग पढ़ के साथ में काम करते हैं, Hmm. यू नो, सो दैट, बट अगेन यू नो लाइक हमारा नीड अलग है, इनका नीड अलग है, हम लोग को ज्यादा लोग चाहिए, तो आई थिंक द Hmm. सिस्टम इज अ लिटिल फास्टर, Hmm. सो दैट इज अ कल्चरल डिफरेंस आई थिंक। Okay. So, can you elaborate a bit on the licensing and certification requirements? Yeah. So, in the US, if you want to become a doctor, you have to have a license, and the license is given by a certain board for the foreign physicians, and for that you need to have the USMLE Step 1, USMLE Step 2, Mm. and USMLE Step 3. So after three Mhm. steps and at least 1 year of residency, you get a Okay. license. That Okay. changes for foreign grads. Mm. For foreign grads, you have to finish 3 years of residency Mm. and your step 1, step 2, step 3, and only then you can get a medical license to practice. Mm. So, and in India, after MBBS, you get a license to practice, and then it gets updated with whatever specialty you have, depending on कौन सा आप रेजिडेंसी या कौन सा सुपर स्पेशलिटी करते हो, then it changes. Do you think it is a barrier for the Indian grads? Did you ever feel like that licensing is becoming a bit of a barrier? You should have some international standards for everyone. Like, anyone who has done his MBBS can come into any country and then directly practice. Do you think that becomes a barrier? I think that's a very interesting point. I think it's fair, is my personal opinion. Why fair? Why Uh, everybody is doing MBBS, right? Everybody is putting in lots and lots of hours. right. In India they are 5 years. They do that. Yeah. US is the same. And why? The medical terminology is same. The technologies are same. Then why Yeah. you think it's fair play? So I think it's fair play because it's not standardized everywhere. In all countries, it's not standardized. India में काफी हद तक standardization है Mm, medical education system का, but there are many mm, other countries जहाँ पे standardization नहीं है. So I mm, think that if I were the authority in the US welcoming all these international grads, I would say नहीं, मुझे थोड़ा सा और उनको देखना है. It's nothing mm. against a particular country or anything, right? It's just to make sure that their population sees a very good trained doctor. So That's all. standardization in what sense? You say that MBBS के बाद इतना इतना चीजें आपको आना चाहिए. You should know all these techniques and whatever things. Standardization in what sense? In the syllabus sense or in the practice sense, or what sense you're talking about standardization? Both, right? For example, अभी भी इंडिया में कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे पढ़ाते हैं सब कुछ, लेकिन उनको इतना पेशेंट एक्सपोजर मिलता नहीं है, Hmm. राइट? तो फिर उनका जो 3 years यहाँ पे करते, दैट इज देयर ओनली रेजिडेंसी। और एंड एक्चुअली इट्स ऑल्सो फेयर बिकॉज इंडियंस, सॉरी, फॉरेन ग्रेड्स एंड अमेरिकन ग्रेड्स आर टेकिंग द सेम रूट हियर। इट्स द Hmm. ओनली डिफरेंस इज दी, इनको 1 साल बाद लाइसेंस मिल जाता है, हम लोग को 3 साल बाद मिलता है, बट सारे प्रैक्टिस जो जॉब शुरू करते हैं वो सारे 3 साल बाद ही शुरू करते हैं। वेरी वेरी फ्यू पीपल लीव रेजिडेंसी आफ्टर 1 year एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, दैट इज ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दैट इज जस्ट अ टेक्निकल दिस थिंग देयर, बट सब लोग 3 साल करते हैं, तो फॉरेन ग्रेड्स भी कर रहे हैं और यहाँ भी कर रहे हैं, सब सेम कर रहे हैं। व्हेन आई से स्टैंडर्डाइजेशन, इट्स इन टर्म्स ऑफ दैट, लाइक कि तुम्हें कितना सिलेबस इज वन, एंड ऑल्सो पेशेंट एक्सपोजर। तुम लोग को लाइक
कुछ लोग का मैंडेटरी होता है, तुम्हारा इतना अटेंडेंस होना चाहिए, कुछ कॉलेज में मैंडेटरी नहीं है Hmm. अटेंडेंस, तुम Hmm. ना जाओ जाओ, वी कैन कंट्रोल, लाइक one would feel that there's too much going on that I cannot control. I don't know what's going on out there. So I think Hmm. it's reasonable you put them through these tests to make sure that हमारे population में अच्छे है. You actually जब foreign grads इंडिया जाते हैं, मतलब अगर मैं यूएस सिटीजन हूँ, Hmm. इंडिया में प्रैक्टिस करना है, तो एक हमारा अलग से एग्जाम होता है बिफोर इंडिया इश्यूज अ लाइसेंस टू दैट फॉरेन फिजिशियन, एंड दैट एग्जाम इज एक्चुअली टिपिकली डिफिकल्ट to crack. Hmm. And so I'm actually glad that India is also testing the Hmm. doctors coming from elsewhere, because the other thing is India has a totally different medical scenario than US, right? Hmm. मैं Hmm. यूएस में प्रैक्टिस करके इंडिया आके ये नहीं बोल सकता कि नहीं मुझे सब आता है मैं करूंगा अभी, मैं जाके उधर ऑर्डर करूंगा सब सामान, वो बोलेगा भाई कहाँ है, ऐसे तो होता ही नहीं इधर। Hmm. सेम बंदा इंडिया आके यूएस में नहीं प्रैक्टिस कर सकता विदाउट एनी एक्सपोजर, right? So and diseases, infectious diseases for example, is very very different. Yes. If Yes. I go to India with cough, my Hmm. differential diagnosis is completely different from when I go to cough here in the US. Hmm. So that exposure you need to be able to see that population. Oh. It's like तुम इंडिया में लॉ पढ़ के यूएस में प्रैक्टिस कर सकते हो क्या, नहीं ना, Hmm. जैसा। Right. So then let's move on to the next thing. Uh, probably the most interesting thing from anyone. How do salary and compensation structures compare for physicians in the two countries? Yeah. So I thought about this a lot when I was just making this decision about salary, right? हम सब बोलते हैं नहीं यार सैलरी की वजह से नहीं आए हैं, but Action that is the ugly truth that everybody झंडा does think. गाड़ But देंगे. I don't mind admitting this, that it is a big factor when people decide to move countries, right? Hmm. So in the US, your compensation is more than India, but that is not the complete truth. Okay. Hmm. So US may, for the number of hours that you're working, you Hmm. get paid more. But India may, if you but that's it, right? You cannot make too much money by working more in all specialties. There are some specialties wherein if you work too much, you can get paid too much. It becomes unsafe after a point. But some Hmm. people do that here also to make millions of dollars. In India, अगर आप उतना काम करो तो आपको उतना पैसा मिलेगा, Hmm. राइट? सो पीपल, अगर आपने देखा होगा टिपिकल इंडियन डॉक्टर का स्केड्यूल होता है जो प्राइवेट में प्रैक्टिस करता है, उसका Hmm. टिपिकल स्केड्यूल होता है, एक तो वो 3-4 हॉस्पिटल में पेशेंट देखता है, खुद का Hmm. क्लिनिक होता है, तो सुबह दे स्टार्ट अराउंड 7 AM, दे स्टार्ट सीइंग पेशेंट्स, 8 AM दे स्टार्ट सीइंग पेशेंट्स, एंड दे कीप गोइंग ऑन अंटिल 8 PM, 9 PM, 10 PM घर जाते हैं, Hmm. and they make money which Hmm. if you compare the currencies, if you Hmm. remove that, the purchasing क्या बोलते हैं उसको, what is that called, purchasing power, right? So the purchasing power for that Indian doctor who works way more is Hmm. actually more than the US. Hmm. But don't you think the quality, reduces by doing that? Yeah, तो reduce होता है obviously, right? तो इसीलिए one of the Yeah, reasons why I if chose you're treating only 10 or 20 patients, yeah, you will be focusing on them and giving more attention. But yeah, when you're doing 50, 60 odd patients in a day, don't you think that reduces the quality of right. treatment? Oh, definitely, and that's a very good point. But and that is one of the reasons actually why I decided to come to the US, that I thought that first of all lifestyle कि थोड़ा सा better है यहाँ पे, and better lifestyle is more easily accessible. You can work less and get the same lifestyle that you would get in India only after working so much. That is the main Hmm. reason why I came to the US. But जो quality of healthcare होता है, it definitely goes on a little bit, but you have to remember the population. Hmm. The number is everything. Yes, So yes. if I don't see, if I'm in a hospital in India and I'm not seeing like 30 patients in a day, then I'm actually doing disservice. Hmm. I have to. Hmm. कोई ऑप्शन नहीं है अभी, सिस्टम एट दिस करेंट डेट सिस्टम ऐसा है कि मुझे वैसा काम करना पड़ेगा। कल को अगर Hmm. वहां पे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स आते हैं, लाइक, एंड डॉक्टर्स का नंबर बढ़ जाता है, मोर वाइडली अवेलेबल, देन यस, देन वी कैन स्लोली कम टू हाउ प्रैक्टिस राइट नाउ इज आउटसाइड ऑफ इंडिया। बट इंडिया में जो पॉपुलेशन है उतना सर्व करने के लिए, अनफॉर्चुनेटली दैट इज हाउ
that is how many patients you will have to see. Hmm. So that is, yeah, it is what it is. Okay, I think the next question which I'm going to pose is like, is for more the pros, Yeah, the research oriented guys and all. What yeah. role does research and academic opportunities play in shaping a medical career in both regions? Now, how much the role research plays a role in India versus how much role it plays in US? So in terms of healthcare practice, the research done anywhere affects practice globally, or it should affect globally. So अगर मैं यूएस में रिसर्च कर रहा हूँ, कोई भी रिसर्च कर रहा है, उन्होंने गाइडलाइंस निकाले, राइट, कि उन्होंने एविडेंस निकाला, फिर एविडेंस से गाइडलाइंस बनते, राइट. Hmm. वो गाइडलाइंस मैं भी फॉलो करूंगा, वही गाइडलाइंस इंडिया में भी बंदा फॉलो करेगा. बट Hmm. वो गाइडलाइंस ऑब्वियसली, जैसे मैंने बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस में जैसा है उसके ऊपर वो फोकस्ड होता है. बट इंडिया में भी वही रिसर्च का लेके हम प्रैक्टिस करते हैं. तो इंडिया में दे फॉलो समटाइम्स यूरोपियन गाइडलाइंस, समटाइम्स फॉलो अमेरिकन गाइडलाइंस, विच एवर सूट्स देम बेटर. तो रिसर्च जहां भी हो रहा है वो इक्वली ग्लोबली इफेक्ट होता है. आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द फिजिशियन कि वो कितना अब्जॉर्ब करना चाहता है. Hmm. अवेलेबल सबको हर जगह है जो चाहिए. But where do you think you get more opportunities for doing a research thing? Do अगर you think खुद रिसर्च करना है मुझे, दैट इज क्लियरली द यूएस. हाँ इंडिया में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम, राइट. अगर मेरा हम्म. यहाँ पे जो अटेंडिंग होता है, अटेंडिंग मतलब प्रोफेसर जो होता है, उसका हम्म. वीक आपको बताता हूँ मैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ही वर्क्स मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे हम्म. संडे मोस्टली ऑफ. हु वर्क इन एकेडमिक्स आई एम सेइंग, हम्म. एंड डिपेंडिंग ऑन स्पेशलिटी, बट सैटरडे संडे इज मोस्टली ऑफ. मंडे टू फ्राइडे वर्किंग. मंडे 3 दिन हफ्ते में वो क्लिनिक रहेगा. एक हम्म. दो दिन he'll be inpatient or something, percentages I'm telling you. And then he'll have admin time separately. एक हम्म. मॉर्निंग का सिर्फ एडमिन टाइम होता है, wherein he clears his inbox, his email, he replies to all the students who've reached out to him for research, all these things. उसके लिए अलग से टाइम है. Then they have हम्म. a research day. Once हम्म. every 3 weeks they have a research day जहाँ पे नहीं भाई तुम्हारा टाइम है ये, you sit, you think, you come up with हम्म. research ideas and then you go to research. तो हम्म. बस इतना टाइम तो इंडिया में हमें नहीं मिलता है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ऑफ नंबर्स, लाइक आई सेड. अगर आप ये हम्म. करने बैठे हो तो पेशेंट कौन देखेगा वहां पे? हम्म. दैट इज वन टाइम. नंबर टू इज ग्रांट्स. यहाँ पे रिसर्च कल्चर है, यहाँ पे एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है जिनका हम्म. सोल काम होता है कि भाई तुम आइडिया लाके दो, तुम हमें प्रपोजल सबमिट करो, हम तुम्हें ग्रांट देंगे. हम्म. बड़ा बड़ा ग्रांट्स मिलता है यहाँ पे, जिससे लोगों का एम्प्लॉयमेंट होता है, ओके. राइट. $1 million दिया तो तुम्हारा उसमें लाइक 10 लोग एम्प्लॉय हो गए तुम्हारे, तो तुम्हारा रिसर्च शुरू हो गया काम. हम्म. वैसे इंडिया में थोड़ा सा ग्रांट्स इतना इजीली नहीं मिलता है. नेक्स्ट, यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री इज वेरी पावरफुल इन द यूएस. दे ड्राइव अ लॉट ऑफ रिसर्च, हम्म. राइट. उनको अपना ड्रग रिलीज करना है तो उनको रिसर्च करना पड़ेगा ना. तो दे आर हम्म. आफ्टर फिजिशियंस लाइव्स कि भाई चलो तुम आओ हमारे पास, तुम रिसर्च करो, हम तुम्हें पे करेंगे. So there's a lot more oriented towards keep driving research forward. So that is there in the US. If you are somebody who wants to research, and I don't know really about other fields as compared to Europe, but अगर आप US में हो तो आपको research definitely medical इसमें तो पक्का आपको करने मिलेगा. Yes. Right. Very good. So, how do the healthcare policies and regulations, influence medical practice? ऐसे Uh, कुछ रेगुलेशंस हैं क्या, वो रेगुलरली बनते रहते हैं या मतलब ये वही मतलब पुराने पॉलिसीज फॉलो करते रहते हैं कि व्हाट इज लाइक? नहीं, आई थिंक थोड़ा सा अपडेट होता है पॉलिसीज यहाँ पे, सनी के पुराने होते हैं. आई थिंक देयर इज मोर फोकस ऑन मेकिंग पॉलिसीज. दे हैव मोर हेल्थ केयर. इफ यू सी the percentage of healthcare spending is higher in the US on healthcare as compared to Indian financial budget. But जो policies होते हैं, those are um, I would say based on, they still focus on accessibility. देयर आर लॉट ऑफ पॉलिसीज अबाउट इंश्योरेंस कि इंश्योरेंस को क्या अप्रूव करना चाहिए, क्या अप्रूव नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें होती हैं. एंड देयर आर मेनी प्रिवेंटेटिव गाइडलाइंस, पब्लिक पॉलिसीज बनती हैं. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में मैंने प्रैक्टिस नहीं किया इतना, तो मुझे पता नहीं कि वो प्रैक्टिस को कैसे लाइक अफेक्ट करता है. बट जितना मैंने मेरे फ्रेंड्स से सुना है, दे डोंट आई डोंट सी देम टॉक अ लॉट अबाउट पब्लिक हेल्थ पॉलिसी वगैरह. Because I think still it's all about demographic. तो अभी इंडिया में जैसे डेमोग्राफिक है हमारा, वो still focusing on problem आए तो फिक्स करो,
Hmm. We have not gotten ahead of that abhi. There's time. I think we will get there pretty soon, but like we're Hmm. still in that process. अभी यूएस में क्या है कि प्रॉब्लम आने से पहले फिक्स करो का चल रहा है. So Hmm. there's a difference in that demographic. So the policies are accordingly made. So, are you aware of any lobbying groups which push for the policy changes, which benefits the community actually? Uh, I cannot name anybody. I don't know any names that will benefit the community. There Hmm. are many lobbying groups who push, No, this is, for make. example, you're in the medical profession and you know, and your friends know that there is certain policy which needs to be pushed Mm, somewhere to get it, right, updated or something like that. So right. you'll be having some, lobbying Yeah, groups yeah, specifically meant for that. They'll push the policies. right, There are right. lobbying groups for every sections, Okay. every departments. So like Good. that, So are you aware of any? yeah, I'll give you an example. So ACC is American College of Cardiology. They Mm-hmm. have a group that takes fellows and like physicians into their group and who are interested in public health policy. They every year they sit together. They have several meetings and they come up with one agenda. Mm-hmm. They present that agenda to Congress. Okay. Every year this Mm-hmm. happens. Mm-hmm. Recently हुआ था actually in DC. So they all go to DC. They have a Mm-hmm. fun, like, 2-3 days there, but they also go and present to the Congress about what they think should be government's priority. कि Mm-hmm. policy change होना चाहिए. So yes, there are lobbying groups like that Okay, cool. benefit the Uh, community. मुझे can India you में होंगे यार, but I don't know of any right now. I think I don't know. Okay. Can you share your personal experiences that highlight the nuances and challenges of practicing medicine in both countries? What are your personal experiences like? Yeah. So I think I still remember, but I guess India mein when I practice, I only practice a very less, like amount of time. So I did only my internship, and I think the thing that I remember the most is about affordability. That is the thing that comes to my mind. Hmm. कि like India में if I'm prescribing something, I remember I prescribed some like 7 days of antibiotics to a patient, and the patient went to the pharmacy. He picked up like 2 tablets. He went Hmm. home, and then he Hmm. came back to my clinic. I think 15 or 20 days later, and he was like, "Sir, आपने जो दवाई दी उससे कुछ कम नहीं हुआ." Hmm. Why the first question that came to my mind, because I was a medical student or just मेरा Hmm. खत्म हुआ था, right? So I'm thinking of, oh, maybe this is the resistant bacteria. ये सब शुरू हो गया मेरे दिमाग में. But then I Hmm. quickly realized that it was nothing. It was just that उसने कोर्स खत्म नहीं किया था अपना, because उसके पास पैसे नहीं थे. Oh, तो okay. उसने 2 ही टैबलेट लिए 7 की जगह. Okay. कोई So दिक्कत. that's from the patient's perspective. So from your perspective, from the medical professionals who are actually working, Yeah. do you have any challenges like from the some kind of pressure from the higher ups? You have to do like this, you have to do like this, certain things that you remember of? Right. So I not personally, because whenever I was there, I was in a training environment. तो मुझे कभी किसी हायर अप से प्रेशर आया नहीं कि तुम्हें ये ऑर्डर करना है, तुम्हें ऑर्डर करना है. Yes, I've Mm. heard stories just like you might have also कि there Yeah. is sometimes in some Because hospitals. in India or anywhere else in the world, the pharma companies are so powerful. For Yeah. example, I can give an example like there is medicine called Dolo for the, Hmm. the brand for paracetamol. So there was a certain phase, or maybe still now, I was going to doctors and they were prescribing Dolo. Hmm. Wherever I go, they're prescribing Dolo. When there are so many paracetamol brands, why the person is only prescribing Dolo is like, is a very questionable thing for me. Yeah. And yeah, kind of. So that's, I mean, that's a good observation. So when I was even in internship in India, I think 2 दिन में एक बार तो फार्मा रह पाएगा तुम्हारे पास. Hmm. कि Hmm. ये मैं तुम्हें कैलेंडर दे रहा हूँ, मैं तुम्हें घड़ी दे रहा हूँ, तुम ये प्रिस्क्राइब करो, तो होता है वो. एंड आई थिंक इंडिया में काफी ओपनली होता है, Hmm. यूएस में काफी डिस्क्रीटली होता Okay. है. Hmm. Hmm. अभी मैं कार्डियोलॉजी फील्ड में हूँ, तो देयर आर मेनी डिवाइसेस दैट वी यूज, Hmm. टेक कंपनीज डिवाइस. तो वो आते हैं, वो आपको बढ़िया से दे बी लाइक दिस इज एन एजुकेशनल सेशन. Hmm. हम तुम्हें पढ़ाएंगे इसके इंडिकेशंस क्या है, कब यूज करना है, आपके पेशेंट्स को कैसे पहुंचाना है ये डिवाइस आपके पेशेंट्स तक. लंच करिए प्लीज, प्लीज हैव लंच, लंच इज ऑन Hmm. अस. तो इट्स अ Hmm. वेरी लाइक थोड़ा ज्यादा अलग टाइप का करते हैं यहाँ पे. आई थिंक द इंसेंटिव इज द सेम.
हम्म बट इंडिया में काफी ओपनली कि भाई चलो करो अब हमारा यहाँ पे हम्म ज्यादा। बट आई थिंक सबका इंडस्ट्री इंडस्ट्री होता है। तो भाई ओके लाइक वी एज डॉक्टर्स एंड एज पेशेंट्स वी डोंट वांट टू सी हेल्थ केयर एज अ बिजनेस, हम्म बट हेल्थ केयर इज ए बिजनेस। of course it's a business, yeah. Have to come to terms with it. Mm, It's only that there is a good way of doing business, the bad way of doing business. The best we mm, can hope for is that we are in the good way of doing business. okay. बट Mm, ये सब चीजें रहेंगी आपके आसपास। इसके बिना आपको सैलरी कैसे मिलेगा, हॉस्पिटल कैसे चलेगा? mm. Okay, the next thing is we'll move into a little bit of privacy concerns. तो Yeah. प्राइवेसी कंसर्न्स के बारे में अवेयरनेस कितना है, डिफरेंस आप देखते हो पेशेंट्स इन यूएस वर्सेस इंडिया? लाइक आई गिव एन एग्जांपल, लाइक यूएस में पेशेंट्स जानते हैं कि दैट दे शुड नॉट रिवील सम थिंग्स, लाइक दैट Hmm. दे हैव सम हार्ट एलिमेंट्स, और दैट दे आर यूजिंग सम मेडिकल इक्विपमेंट्स, बट इंडिया में वो अवेयरनेस नहीं है। Hmm. सो उस हिसाब से आप कैसे देखते हो कि मतलब इंडियन फ्रेटर्निटी उतना मतलब अवेयरनेस दे पा रही है अपने पेशेंट्स को वर्सेस कंपेयरिंग टू द यूएस? आई थिंक इन द फील्ड इटसेल्फ मैंने फ्रॉम अ पेशेंट स्टैंड पॉइंट मैंने इतने कंसर्न्स कभी देखे नहीं है। सो यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस। आई मीन हम लोग एक्चुअली लिटरली क्वाइट लिटरली एवरी 2 years और एवरी 3 years वी हैव टू डू training as physicians in a certain thing called HIPAA. It's basically ओके, या या। privacy for about patients. So as physicians हमारा focus बहुत होता है, but हम्म in India में वो शायद थोड़ा कम होगा because not very regulated that way. हम्म हम्म I guess this generation is in general like कि नहीं यार, एक पेशेंट के बाद में दूसरे के पास नहीं करूंगा। हम्म But जहाँ जब मैं वहां था तो नहीं, इट वाज वेरी ओपन। एक तो जैसे हॉस्पिटल में था, एक टेबल होता है बड़ा सा, उसमें 4 लोग बैठे तो सब उधर ही चल रहा है। सारे प्रॉब्लम सबको बता देते हैं। तो रिसोर्सेस है उधर ही, सब चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, सबको पता लग जाता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, बट पेशेंट की इवन तरफ से कि नहीं। इवन मेडिकल प्रोफेशनल्स जो डॉक्टर्स है वो भी इतना उनको भी इतना मायने रखता है ना, कि मतलब वो बताते नहीं है कि भाई आपको ऐसा नहीं बताना चाहिए, वो भी नहीं है। वो हाँ, इंडिया में ऐसा नहीं है। और दूसरा कि ये वैसे नहीं। इंडिया में ऐसा नहीं है, लाइक बाकी पेशेंट जो आसपास है, उनको पता लग जाता है, पहली बात। हम्म एंड दूसरा है कि इवन इफ दे हैव टू मेक एन एग्जांपल, आई थिंक दे विल लाइक हाँ ठीक है, इसका ऐसा था, तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए टाइप्स कभी कभी बोल देते हैं। हाँ दूसरा या है कि प्राइवेसी का दूसरा होता है कि फैमिली के अंदर ही, अभी फैमिली में अभी अगर सपोज मम्मी का कुछ कराना है, तो जो हम्म बच्चे होते हैं वो जाते हैं सपोज मम्मी को लेकर, तो कभी कभी हम्म मम्मी को बताते नहीं है, बच्चों को बता देते हैं कि ये हाँ डायग्नोसिस है, ये ट्रीटमेंट है, कर दो, ठीक है ना। हम्म तो लेकिन हम्म ऐसा यूएस में ऐसा नहीं होता है। मुझे हम्म एक्चुअली वो तो आई डोंट लाइक दैट ऑल्सो कम्प्लीटली, क्योंकि हम्म फैमिली स्ट्रक्चर इज वेरी डिफरेंट देन हमारे इंडिया में। तो हम्म यूएस में अगर कोई पेशेंट है, तो पेशेंट में कोई और सपोज बैठा है, तो वी आर हम्म टॉट टू आस्क देम if हम्म it's okay if I discuss your ailments in front of your हम्म brother or your mother or whoever. या So that is very like I said, हम लोग को बहुत ट्रेनिंग मिलता है, बट हम्म। पेशेंट्स अपना कितना रिवील करते हैं, दैट इज अ वेरी सोशल थिंग। आगे हम व्हाट लोग डू यू थिंक दैट इज टू एक्सट्रीम, कि मतलब फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता होना चाहिए, दैट इज टू एक्सट्रीम? यू थिंक लाइक दैट, यू फील लाइक दैट? मतलब कभी कभी लगता है कि मतलब इज एम आई बीइंग स्टूपिड, शुड आई रियली डू आई रियली हैव टू आस्क, लाइक ऐसे मतलब वो उनके माँ बाप है या फिर उनकी वाइफ है या फिर जो भी है, मुझे लगता है कि पूछना चाहिए क्या। बट आई थिंक वी ऑल्सो टू रिकॉग्नाइज दैट यहाँ, लाइक आई सेड, यहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर डिफरेंट है, राइट। हम्म तो फॉर एग्जांपल अगर वो वाइफ है सपोज, लेकिन they don't get along or they live separately or you don't know what is going on between them, and दूसरा ये है कि डर रहता है कि पेशेंट तुम्हें बाद में क्या बोलेगा। हम्म मैंने बोला क्या तुमको उनको बताने के लिए, तुमने क्यों बताया उनको, वैसा बोलेगा तो हम जवाबदार है ना फिर। हम्म दैट इज, कभी कभी लगता है इट इज एन एक्सट्रीम, बट इट्स लाइक ठीक है अभी जाने दो, आई एम यूज्ड टू दैट ना। okay. या Yeah, because for you it's a shift, right? So it या will take some time to digest the या new इट टुक मी एटलीस्ट 1 year, मैं पहले पहले पूछता भी नहीं था। hmm देन मुझे लोगों ने ऑब्जर्व करके बताया कि नहीं यार, यू कैन नॉट टॉक अबाउट दिस, देयर आर 7 फैमिली मेंबर्स, यू डोंट नो हु द पेशेंट वुड is okay with getting the information, who is not. yeah. Patient should be the controller. तो ठीक है, अभी वैसा माइंडेड हो गया। एंड ये वो चीज भी होता है ना, कि मतलब जैसे कि आपने कुछ बताया आपके कुछ बीमारी के बारे में, हम्म। तो 10 लोग 10 चीजें बता देंगे। हाँ, एंड वो
And there is no authentication for whatever chitkas or tricks, whatever they're giving. There is no authentication for that. Right, right. And you may be misleading by all those information. सब लोग बोल देंगे यार ये कर दो वो कर दो वो कर दो. Yeah. किसी ने बोला हेयर फॉल है, अरे हमारे हेयर फॉल हो रहा है, तो 10 लोग 10 चीजें बता देंगे. हाँ, वो तो है. तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है. राइट. और इंडिया में लेकिन एक एक्सट्रीम है. इंडिया में एक्सट्रीम हम्म. क्या है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, राइट? तो द पेशेंट डजंट नो कि क्या हो रहा है हम्म. उनको. हम्म. अभी एक पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में, वो बोलता है कि अरे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, करके उनका स्टेंट डाल के आ देते हैं. वो पेशेंट को पता ही नहीं है. हम्म. ये वो थोड़ा सा एक्सट्रीम लगता है कि भाई ऐसे तो मत करो, कम से कम लाइक यू हैव टू कीप देम इन द पिक्चर. ओके. बट जैसा है वैसा है. आई थिंक दे इवेंचुअली एवरीथिंग कम्स टू अ मीडियम. बट Okay, that's great. So, what advice would you give to medical students or professionals considering a career move between the US and India? yeah, I get asked this a lot, and I would say first you have to know your priorities. क्या प्रायोरिटी है? नंबर वन ये है कि लोग बोलते हैं कि मुझे पैसा कमाना है. Hmm. वेरी गुड रीजन टू कम टू द यूएस. ठीक है. Right. बट यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इंडिया में भी उतना पैसा बना के रह सकते हैं. थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, बट कर सकते हैं. दैट यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. यूएस में तब अगर आ रहे हो तो सेकेंड थिंग दैट दे से इज मुझे एकेडमिक ये चाहिए, स्पेस चाहिए काम करने के लिए. तो देन पीपल से कि मुझे रिसर्च भी करना है, मुझे क्लिनिकल भी करना है. तो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स ऑल नॉट ऑल रोजी. जिनको रिसर्च करना होता है यहाँ पे, इफ यू सम पीपल टेल मी लाइक मुझे 30% करना है, मुझे 70% करना है. यस, जॉब इज फ्लेक्सिबल यूएस में ज़्यादा, बट इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि तुम अपने टर्म्स कोड करोगे कि भाई नहीं हमें इतना ही चाहिए, इतना ही करना है मुझे. बिकॉज अगर आपको रिसर्च करना है, अगर Hmm. फोकस्ड रिसर्च आपका अगर जॉब है, तो आपको Hmm. ग्रांट्स लेके आने पड़ेंगे. Hmm. आपको उधर को बिठा के कोई पाल पोस के बड़ा नहीं करने वाला है यूएस में भी. आपको ग्रांट्स लेके आने पड़ेंगे. ग्रांट्स लेके आने के लिए बहुत मेहनत लगता है. ठीक है. Hmm. तो इतना मेहनत लगता है कि आपका क्लिनिकल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. तो जस्ट Hmm. कीप इन माइंड व्हेन यू कमिंग हियर कि नहीं मुझे रिसर्च भी करना है, ये भी करना है, मतलब थिंक अबाउट दिस पार्ट ऑफ दैट एज वेल. नंबर Hmm. थ्री ये है कि सम पीपल डोंट रिकग्नाइज दैट होम सिकनेस रियल होता है. होम सिक होना. Hmm. लोग सोचते कि अरे क्या है, अभी तो तुम आपके साथ ही थे, अभी क्या अब जाके वहां जिएंगे. मैं मिस नहीं करूंगा किसी को भी. आई मिस माई पेरेंट्स अलॉट. Hmm. एंड Right. लगता है कि नहीं नहीं, वेकेशन साल में एक बार मिलता है. वेकेशन Hmm. एक महीना मिलेगा वेकेशन में, इंडिया में रहूंगा एक महीना. Hmm. पीपल डोंट रियलाइज इज वो एक महीना जब प्लान करना होता है, तो Hmm. आपको वीजा का रिन्यूअल डेट ढूंढना पड़ता है. Hmm. वो डेट उस एक महीने के अंदर लैंड होना चाहिए. Hmm. वो लैंड होने के बाद आपको पासपोर्ट, जब एम्बेसी जाते हैं तो वापस 2 हफ्ते में पासपोर्ट वापस आना होता है. Hmm. वरना वापस काम पे नहीं आ सकते आप इधर. Hmm. ठीक है. और अगर लाइक इफ यू एंड नॉट ओनली फैमिली, फ्रेंड्स ऑल्सो, इफ योर फ्रेंड्स आर इन लाइक ऑल डिफरेंट प्लेस इन द यूएस, इन इंडिया, बी रेडी टू मिस ऑल ऑफ द वेडिंग्स. Hmm. Right. Right. दिस इज Yeah. गोइंग टू हैपन. दिस इज समथिंग दैट वी डोंट, बिकॉज हम नहीं, Realize you वी डोंट the प्लान फॉर ऑल दिस. बिकॉज उस yeah. टाइम पे हमारे दिमाग में क्या रहता है कि नहीं नहीं मैं यूएस जाऊंगा और डॉक्टर बनूंगा. वेरी गुड. बट Hmm. दीज थिंग्स ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर थोड़ा सा. इफ Hmm. यूर ओके विद दिस, Hmm. which now I've missed my very very close friend शादी. अभी क्या कर सकता हूँ, मिस कर दिया, हो गया. Now I'm okay about that, but like Hmm. remember those things. And second Yeah. is, the last thing about this thing is visa is very important. uh, Hmm. तो कौन से वीजा पे आप यहाँ पे आते हो, that is a whole other discussion, but that is also very important. And Hmm. but ideal situation to be in the US आपको बताता हूँ मैं. ठीक है. Hmm. If you have a family who is almost gonna give you a green card, Hmm. or you have a lot of family in the US, Hmm. okay, and you like a little bit of that academic feel, and you want to Hmm. work a little bit less and make equal amount of money, Hmm. and you want a slightly different lifestyle than you right now getting in India. Hmm. अगर ये चीजें हैं तो you are the perfect candidate to move. Hmm. ठीक है. Right. अगर आपका यूएस में कोई भी फैमिली नहीं है, Hmm. अगर आपका वीजा सिचुएशन इज जस्ट लाइक माइन, जैसे आपको Hmm. यहाँ वीजा लेना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा, वैसा है. ठीक है. Hmm.
अगर इफ यू आर ओके विद बीइंग इन इंडिया एंड कि हाँ मुझे प्रैक्टिस वहाँ पसंद है, ठीक है ना, बट आई थिंक आई वांट लाइक दैट रिसर्च, इसलिए मुझे जाना है, तो थिंक इट्स स्टिल, आई वुड स्टिल से आओ यूएस, मैं तो कभी मना नहीं करूंगा यूएस, बट थोड़ा सोचो उसके बारे में कि तुम व्हाट यू गेटिंग इनटू। यूजुअली पीपल क्या करते हैं ना कि उनका पैशन होता है यूएस जाने के, बट कॉन्सिक्वेंस नहीं देखते। राइट। क्योंकि मैं भी अभी यूके में हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं इधर, देन दे गेट स्टक समवेयर, लाइक दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर जॉब्स or something of that sort, and then they cannot make their ends meet, and then eventually they get frustrated, and then then they go back. या So पहले ही मतलब या तो प्रॉपर गाइडेंस ले लो, या जो बंदा ऑलरेडी गया हुआ है वहाँ, थोड़ा सा सक्सेसफुल है, सेटल हो गया, उससे थोड़ा सा प्रॉपर गाइडेंस ले लो सारी चीज़ें, कि ये या नहीं कि मतलब कैसा है कि वहाँ लाइफस्टाइल वगैरह तो सब कुछ, सब लोग अपने वीडियोस पे तो सब लोग अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, बट वीडियोस में जो दिखता है वो सब हर जगह ट्रू नहीं होता। बहुत सारी चीजें, वाई वी शुड शो और सैड लाइफ टू एनीवन ऑन द वीडियोस। तो ये चीजें थोड़ा सा स्टूडेंट्स को भी ध्यान रखना पड़ता है। या दैट्स आई थिंक वन लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क, what about the telemedicine technology and the exchange programs between US and India? Are there many? Are there few? What's like? What's the scenario is like? So, so you mean like telemedicine in the US, like Technology, yeah, adoption, adoption? Yeah, I yeah, think in US it's versus big. India. I think it's big. मुझे इंडिया में I don't really know exactly कैसा हो रहा है. I think I would guess it's a little bit lesser because उतना टेक्नोलॉजी सब लोग के पास नहीं है accessible, right? Mhm. अभी यूएस में कैसे होता है कि there is a separate room wherein you have a computer, patients के पास usually रहता है सब कुछ, and then since कोविड के पहले से टेलीमेडिसिन शुरू हुआ था, बट कोविड Okay. में बहुत पिकअप हो गया। Okay. Mm. अभी इतना एक्सटेंड हो गया, कभी कभी वी फील इट्स अनसेफ, देयर Mm. आर इंस्टेंसेस आल्सो कि नहीं, दिस Mm. यू शुड कम इनटू द क्लिनिक, आई कैन नॉट सी यू इन ऑन द वीडियो, आई नीड टू Mm. एग्जामिन यू एंड डू इट माई सेल्फ। Mm. ऐसे इंस्टेंसेस भी है, तो इसका मतलब है कि काफी हद तक टेलीमेडिसिन आ चुका है, Mm. बहुत Mm. एडवांटेजेस है उसके। बट Mm. इंडिया में अभी तक एडॉप्शन, आई एम नॉट श्योर प्राइवेट सेक्टर में कैसा है, बस आई थिंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी भी एडॉप्शन इतना नहीं हुआ है, दैट इज माय गेस। Mm. Oh, that's it. We came to the end of this podcast. बहुत सारे चीज़ें हमने डिस्कस की है। या तो गाइस, अगर आपने भी मतलब एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसी और भी वीडियोस हम लेके आएंगे, पॉडकास्ट लेके आएंगे। थैंक यू सो मच सत्यप्रीतम। यू वांट टू से एनीथिंग इन द लास्ट एज ए मैसेज? नो, थैंक यू रवि, दिस वाज How did you ग्रेट। feel? How did you feel about the whole podcast, Yeah, I about think the this. No, I think this was questions and great. everything? I thought the questions. So I've interviewed before with people who are in the same career as I am, right? So all the questions, I expected a certain type of questions, but I think because you are not in the medical field, but you are still had like very pertinent questions that um, are more about social issues. So I like that. I think it kind of some kind of stimulation intellectually. So that was good. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.